Did you have until now enough fruits? Did you have enough fruits? Yeah. Do you want more vigor or not? No, I don't want more vigor. Not more vigor. So I want vigor, but not more vigor. Not excessive vigor. And another question is because in general, with the let's say with the smaller trees in general, we try to have one central stem. Is that the same what you like? Yeah, it's Yes. So that means that this one is because of the thickness is heavily competing for the top. Yeah, I know that. So right. for that reason, there's a kind of basic rule. Right. No competition with the litter. Oh, no. I was, No competition with the litter. Right. Agreed or not agreed? Agreed. Why not agreed? you know, there's a basic rule that a side branch may not be thicker than half of the top branch. So this one is quite a bit the same as thick. So this should be off. Yeah. No discussion as far as I can see. Right. For the rest, it depends on what your level or what your shape want to have for the future. You think that you will not have spur if you cut here. I would like to have growing as well, do it like this. Won't this grow excessively now? This will grow quite a bit, but you want a bigger tree because they are separated about 175 or 2 meters. Right. So you need more To fill in the area. To fill the area, because otherwise it takes too long. I think it's already taken its place. It is of fire. Yes. If I bend it, And it's already more than that. This tree also bends down. Yes, it's a strong one, but it could be a good solution to make this space filled up as soon as possible. The best time to do is already past. The best time to do so, in our opinion, is before the 15th of August. Right. Then, if you bend it before the 15th of August, it's grown in this shape in about 10 days. And now it will wait till springtime before We'll do it in the spring, right? Before new, yes, but in the springtime we always think we are very busy. There's also a very practical reason to do it in summer holiday, because in summer holiday we have a lot of children having holiday time. Youngsters 12, 13, 14 years, and that's a very good job for them to do. That's quite a practical reason, you know. We have enough population to do it any time of the year. I think we have sometimes also in the Netherlands, but the problem is that they don't want to do it. Yeah. So that's a different problem. Yeah. I think here the same. Here I'm doubting. Which one to keep? Yes, because this one, because in general you can say horizontal branches are more fertile than vertical branches. And this is also competing more or less the top. I prefer to keep this top. If you want, I do not exactly know what happens, you can do it like this, but I think it's better like this. And for now, possibly like this,
and this one goes up. And for these ones, for now, I leave it. But you can discuss if you would cut it here. This one not, because there are no, here, let it go. This one, you can do it like this and you can leave it. I would like to leave it for now, maybe, sorry, maybe you can bend it like this. So then it's just on the other side, balanced, yes. Okay, that's it, as far as, yes, we are not so happy with this type of trees. Maybe you are because they are fertile, but most they're very near to the soil. You have the worst quality and weeds growing around, so perhaps. Agree? What about this? This one. Yeah. This will be a strong grower. And in fact, if you keep it like this, it will go up as a competitor for the top as well. So this solution to bend it like this makes it somewhat more quiet. There will be water spouts coming out from here. Nothing. Yeah. Just short ones. Not short one. Very vigorous one. We have, because our land is more Very vigorous one. Why? We because you have a lot of production here. From here No, also. from here also. If we bend it, the problem which we have is we get lots of. Lots of water sprouts. And they compete with the leaders. And do you think that you will have, because our experience, if you do like this, that you have, of course you will have new shoots, but We'll have to pinch them. not that very long ones. Yeah, they will come long ones. If we Maybe, yes, but that is probably the difference between M106 that we don't have much experience with anymore and M9. Yes, we are working, M9 में नहीं आएंगे. M9 we are working with M9. For M9. And in M9, if you do like this, you won't have this kind of shoots. For I'll sure show you in my other orchard. There are many water shoots in M9. We are more interested in 106 and 111 vigorous stocks because almost everyone, lots of people don't have irrigation facilities here. And we don't have sandy soils. And We got have clay soils. Heavy soils, and basically to go on M9 here is very difficult. sandy soils. We don't have sandy soil. Don't have Clay, sandy. clay is on itself, clay is convenient for M9, but I can imagine that your drought sensitivity is more on M9 because the rooting of these M106 and 111 is deeper and heavier than M9. Yeah, I can imagine that. Performing better than this. Yes, but my experience with M106 is limited in this kind of things because we are working most of it with M9, and we also have other high stem trees aged 50, 60 years old. When I was 20, 30 years, we used to have a lot of them, but now in professional sense, they are disappearing. We don't have irrigation here. We don't have any irrigation. You are afraid that it's drying here? This will, not this one, but if I cut like this, it will turn into canker. Like this one. Like this one, it will be a canker tree now. Yes, but we discussed it already earlier this week in Kashmir, and they told us in these northern regions of India we don't have canker. We have a We lot have of canker. Main problem is They don't have canker. Here they don't have Canker is a major issue. Look at the tree out there. See, what They don't have it in Kashmir. That makes the situation about pruning so far different that we Kashmir is having in a our lot of country irrigation. are That's why not. they are having a less problem. Temperature. I'm wasting these nutrients. वो वहाँ पे ग्रोथ इमीडिएटली आ जाती है। नहीं तो ये एक बराबर जैसे नहीं देखेंगे। अरे समझे नहीं आप, अभी एक बराबर है। ये थोड़ा सा इतना एक्सटेंड कर दूंगा, हो गया। चलो। और अगर इस साल नहीं हुआ क्लोज, ये तो कहीं जाना नहीं है। इसमें सेब लेगा 2 साल बाद खुद झुक जाएगा, फिर उसके बाद लीडर बन जाएगा। अच्छा लीडर में हार्ड कट नहीं दे। हार्ड कट तो किसी में भी नहीं देना। फर्क कहाँ है जी? आपने इसको यहाँ से काटना था। मैं 2 फुट आपसे पहले ही एडवांस चला हूँ। कैलकुलेशन करेंगे ना जी, तो जितना आप डाउन काटेंगे उतना और दूसरी बात है, देखो मैंने इसको काटा यहाँ से, ठीक है ना, इतना आपने काटा इसको यहाँ से, जख्म में भी फर्क देखो कितना ज्यादा जख्म में तो हो तो नेचुरली होगा। वो ग्रोथ लेके भी वहीं पहुंचेगा दोबारा। अब मैं 2 फुट आपसे एडवांस चल रहा हूँ, जब तक आप जुलाई पहुँचना मैं पहुँच जाना कहीं ना कहीं। अब मैं इसमें ग्रोथ प्रॉपर आएगी, ज्यादा आएगी। और एक फायदा और होगा इसका, यहाँ 2 और 3 साल में ब्रांचेस या वाटर शूट्स निकलेंगे। 2 और 3 साल वो मैं नीचे दिखाऊंगा आपको।
घर में। हाँ पर ग्रोथ इससे भी ज़्यादा होगी जो आपने मोटा हेडबैग दिया। अगर मैं यहाँ हेडबैग देता ना वो कम ग्रोथ देगा, ये ज़्यादा देगा। ज़्यादा मोटा हो गया ना ऊपर। ये कंसेप्ट अलग है। इसमें मैंने 2 साल लालच किया, सेब लिए, पिछले साल फिर नंगे किए, फिर जाके टहनी आई इसमें, ये हुआ फर्क। डैमेज भी तो कम दिख रहा है। ये बीमा बन गया, ये इसको हम खुला छोड़ देंगे जो ये खुला है, काट सकते हैं आप इसको, यहाँ से काट सकते हैं चाहो अगर आपको अभी ये वीक पे चला गया। पर अगर आप इसमें हेडबैग देंगे ना तो पेपरी बात है, खुला छोड़ना पड़ेगा। काटने से अगर आप हेडबैग देंगे अब प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर लगेगा तो मैं अकेले होता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा लोगों को ज़्यादा को। नहीं ठीक है, क्या पता यहाँ पेपरी बाग आ जाएगा। हम ऐसे करते कई बार यहाँ हेडबैग देते फिर पेपरी बाग आएगा। बाकी जितने भी वाटर शूट है मैं सब में भी कौन सा तो यहाँ पुरानी जगह से काट दो, कट कर दो, 1 साल का कॉम्प्रो है ग्रोथ का, बाकी नीचे तो खुल जाएंगे। मतलब वो तो अगर आप लूज कट भी दोगे ना तब भी खुल जाएंगे नीचे। ये बोल रहे हैं यहाँ तो दिया ही नहीं हुआ, देखो फिर भी यहाँ से काट नहीं आ रहे, नहीं यहाँ से काट दें तब तो ग्रोथ आएगी ना। नाइट्रोजन थोड़ा नाइट्रोजन भी कम कर दो, बस हल्का सा, नाइट्रोजन कम कर दो, बस इतना सा, नाइट्रोजन कम कर दो, इतना कट काटो, डालो ही ना, मेरा यही आपने कुछ नहीं कट करना उसको ना पूरा लूज छोड़ दो। साइज में पेड़ तो 1 साल गंदा दिखेगा आपको, पौधा 2 साल तक गंदा। इनसे पूछो जब वही तो फॉलो किया है। जब मैंने शुरू में की थी छोड़ देना। हाँ 2 साल छोड़ अरे दिया। ऐसा फर्स्ट ईयर सोचते थे कि तक क्या हो गया इस बगीचे में। थर्ड ईयर को क्रॉप लगेगी, एक बेंड होगा, वो बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, पूरा बेंड हो जाएगा और पूरी तो प्रॉपर जो रखना है ना आपने फिर थर्ड ईयर आप सिलेक्ट कर सकते क्रॉप से ही बेंड हो जाएगा ना, क्रॉप से ही बेंड हो जाएगा। बाकी हो। और आपका दोनों ही सिस्टम ठीक है भाई, वही तो चीज मैं बोल रहा हूँ। हम लोग ना काम होते हैं, पौधा गंदा दिख रहा है, गंदा दिखने दो पौधा। जंगली पौधा था तो जंगल से आया, गंदा दिखने दो। अरे जंगली ज्यादा बेटर है। हाँ वो गंदा ही ठीक है। 2 साल गंदा दिखने दो, तीसरे साल आप प्रॉपर इसमें ला लो उसको। तीसरी साल आपको पता लग जाएगा ना जब थर्ड ईयर में और क्रॉप में आपको सेकंड ईयर ही फर्क पता क्या होता है जी। जैसे ये टेनिया है, मान लो एक पौधे में आपके 50 वो छोड़े आपने, 50 के 50 नहीं है, 25 के टिप पर सेब आते हैं, तो 25 दाने तो आएंगे ना आपको एक्स्ट्रा, जो कभी नहीं आने थे, जो कभी आने ही नहीं थे। 25 दानों का फायदा तो 1 साल में मिल गया आपको। बड़े पौधे में तो आप अगर 500 छोड़ेंगे तो 500 दाने, 1000 टेनिया छोड़ेगे तो 1000 दाने। टिप में तो लगता ही है, टिप में तो लगता है, टिप में तो दाना लगता है, वो प्लस है ना आपके लिए। हाँ फ्रूट क्वालिटी और पौधे की देखने में गंदा दिखेगा। फ्रूट क्वालिटी छोड़ो, 2-3 साल का लालच छोड़ो, जब 3 साल के बाद आएगा तो फिर पंकज भाई की तरफ बगीचा दिखेगा। और जो बड़े पेड़ हैं उसमें भी जैसे छोड़ देना जी, टॉप यही छोड़ देना बस। सुनो पंकज भाई ने वही तो देखो, जैसे बड़ा पौधा है ना, उसमें क्या है, हमारे ये ब्रांचेस बने हैं सब में, हमारे सब ब्रांचेस बने हैं ना वहाँ। 5.5 इसको वीक में डाल दो, इसको एक को सिंगल को टॉप रहने दो, हेड को। ग्रोथ ज्यादा है ना, जहाँ 2-3 साल सारा छोड़ दो, कुछ नहीं काटना उसमें, कुछ नहीं काटना। 2 साल के बाद फिर से अगले साल रिंग पे आ जाएंगे। अब देखो जैसे इन्होंने यही छोड़ा था, अब देखो ऐसे ऐसे छोड़े थे, ये रिंग कट गया, ये रिंग पे कट गया, ये भी रिंग पर है, मगर ये भागेगा भी ना, इसको छोड़ के भी फायदा और रख के भी ये भागेगा, फिर ग्रोथ लेगा ये, क्योंकि सेकंड ईयर में है ना। मोटा रहना वैसे भी ग्रोथ ले लेता है। सीधी सी बात है, ऐसी चीजें नहीं छेड़नी है आपने, इसको नहीं छेड़ना है। जो छोटे है ना इसको तो छेड़ना नहीं, अगर ग्रोथ नहीं चाहिए कुछ नहीं काटना, उसको छेड़ना नहीं है। बड़े ट्री में 1 फुट तक भी छोड़ते हैं, 9 इंच तक 9 इंच इज इनफ। इतना 9 इंच तक कई जगह बड़े पेड़ों में जैसे धीमे के आगे आ गई ऐसी ग्रोथ, जैसे 2-2 फीट तो ये भी आई है ग्रोथ, ये भी छोड़ देगा नहीं आता। अगर आप काटोगे इसको तो और भागेगा, और भागे खाली जगह में है उसको तो ऐसे रहने दोगे तो उसको भी छोड़ दो, हम तो छोड़ते नहीं, 2 फुट तक वो छोड़ सकते हैं, खड़ा होता है कई बार वो सब छोड़ देते हैं। 2 साल तक कुछ नहीं काटना, अगर बीमा बढ़ाना है कहीं ना कहीं रोकनी है आपने तो यही है, रोकना ही है उसको। सिर्फ आपने जो ये मेंटेन है बस इसका टिप काट देना, ताकि थोड़ी सी हाँ, बस वो ना रुके। करते हैं ठीक है, 2 पेड़ में आपके ज्यादा आ रही है, 4 में कम भी आ रही है। स्पर में ना कभी भी अनटॉप मत छोड़ना। स्पर वैरायटी ऐसी अगर एक बार रुक गई ना फिर बिल्कुल छिलके निकल जाएगा आपके ग्रोथ लाते। टॉप करना है। हाँ टॉप मेंटेन है तो टॉप करना है जो आपका लीडर चाहे वगैरह आप इतना काटो चाहे इसका काटो। ये तो आपको 6 इंच निकालनी है। दोनों चीजें चाहिए। अब देखो ये है ग्रोथ भी चाहिए और ऊपर भी चाहिए, क्योंकि ये तो कंपटीशन में आ गई इसके। अगर ये दोनों टाइम से ऐसी बैंड होती ना
तो ये मजबूत होना था। ये देखो वीक हो गया, ऊपर ग्रोथ रुक गई, इसको काट ही दो और इसकी ज़्यादा होगी देखो। चलें जी अब जो थे, मैंने ऑरेगन पहले चलता था, ऑरेगन स्पैरो रेड चीफ, मैंने वो सीडलिंग पे लगाया, उसका डिस्टेंस रखा 13 फुट, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट आ गया रूट स्टॉक का, फिर आ गया आपके जैसे आपका स्कारलेट स्पर आ गया, आपका सुपर चीप आ गया, वो फिर मैंने जो 13 फुट के बीच में 7 फुट था उसमें लगा दिया, मैंने लेआउट में लगाया सारे, वो कंसेप्ट हो गया। अब आ गया M9 का, फिर 13 फुट की जो मेरे पास बीच में डिस्टेंस था ना, और तो एक लाइन मैंने M9 की ठोक दी उसमें। तो मैंने मतलब उस, अगर उधर से मेरे को अभी पैसे मिल रहे हैं सीडलिंग वाली से, उसी से पैसे मिल रहे हैं, उसी से मेरी फ्रूट निकल रहा है। जो 111 पे लगाया अभी वो भी बन रहे हैं, जो M9 पे वो पिछले साल से शुरू किए, तो सारा क्लियर हो जाएगा कौन सा कामयाब है। अगर M9 का कामयाब है तो मैंने वो पढ़ देने की ये रखा हुआ है सारा, मैंने मतलब सारे स्कोप्स रखे हैं, ऐसे ना हो कि फेल ना हो जाए। तो इसलिए जो चीज़ अभी अजमाई ना हो तो उसमें तो सारी ट्रायल सोच समझ के चलना पड़ेगा। बाकी तो जो पैसे मिल रहे हैं हमारे को तो रॉयल से ही मिल रहे हैं, रॉयल से। अभी कोई क्लियर नहीं है कि मतलब कौन सा वैरायटी बिल्कुल अभी बोल नहीं सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। बाहर था, बाहर जहाँ इटली में था मैं, इटली में ऐसे टेरेन है सर, जहाँ माउंटेन में हमारे को ले गए थे, सेम हमारी तरह से, और इस तरह से उन्होंने धड़ियाँ नहीं बनाई, उन्होंने सीधा फ्लैट रखा हुआ, वो उसमें M9 पे सारा लोकल वैरायटीज़ है, रेड वैरायटीज़ 4% है वहाँ, 4.5 बाकी वो खटे हैं। अच्छा, गोल्डन 69% गोल्डन है, आपका 15% ग्रैनी स्मिथ है, उनकी फिर लोकल वैरायटी है, कांजा, पिनो, वो ऐसे करके उनकी जो खट्टी वैरायटी, एसिडिक वैरायटीज़ वहाँ ज़्यादा है। तो उसकी क्या नाम मांग ज़्यादा है? वो पता क्या है जी, वो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है, नंबर 1। जो बायो प्रोडक्ट्स उसके बहुत बनते हैं। आप ग्रैनी स्मिथ का जूस पिएंगे ना, तो ये तो कड़वा आता है, मीठे जो रॉयल का, उसका जूस इतना बढ़िया है, हाँ, उसके पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये है सर, मैं वहाँ देखा, पर वहाँ सारा मैकेनाइज्ड है सर, लेबर बड़ी महंगी है, सारा मैकेनाइज्ड। हम टोटली जो लेबर पर डिपेंड है। 11 फुट की रोज है जी, वो लगाया 40 यानी कि 2.25 फुट में, घने। अच्छा, एक सीधा डंडा है ऊपर, सीधा डंडा इतनी M9 पे होने ना, छोटी टहनियाँ जी, 1.5 फुट, बीच में ट्रैक्टर, मिनी सा ट्रैक्टर है, उसमें सारी अटैचमेंट्स फिट होती है, उनकी स्प्रे की मशीन भी उसी में फिट होती है। टिलिंग करने के लिए टिलिंग ज़्यादा नहीं करते सर, कोई मैं बताऊँ, क्योंकि तिरछे ना वो सॉइल इरोजन नहीं करते बिल्कुल, घास हफ्ते बाद निकालेंगे, उसकी मशीन उसमें अटैच हो जाती है बस। कोई कवर क्रॉप्स वगैरह कुछ नहीं, कवर क्रॉप वगैरह कुछ नहीं, घास मल्चिंग क्या, पेबल मल्च या नहीं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्टर्स लगाते हो, सनलाइट कम है, समर प्रूनिंग करते हैं शूट्स को ताकि एक्सपोज हो सनलाइट पेनिट्रेशन। बाकी वहाँ जो डिजीजेस मेन है वहाँ स्कैब और कॉटन मॉथ है, और नहीं बाकी जो है ये अल्टरनेरिया वगैरह, गोल्डन वगैरह में आता है, बाकी नहीं है ज़्यादा वहाँ पे। अच्छा, जो इंसेक्ट्स के लिए क्या करते हो, फेरोमोन्स होते हैं, उन्होंने फेरोमोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कैप्सूल टाइप है, वो रिपेल करते हैं, उनका जो मेटिंग पीरियड है ना उसको अट्रैक्ट नहीं होने देते, हाइबरनेशन बंद हो जाती है। हाँ, मतलब वो मीटिंग नहीं होगी तो आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगी। एक वो है उनका लाइट ट्रैपर्स बहुत है, बायो कंट्रोल्स, वो बायो कंट्रोल्स बहुत, हाँ। बाकी आपके यहाँ बेच रहे हैं बायर वगैरह जो है, ये चीज़ें जो नेटो शटो वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ मेरे ख्याल से जो ये जो पुरानी फंजीसाइड यूज़ करते हैं यार, बड़ा बढ़िया फंजीसाइड। दूसरा वो कोऑपरेटिव का बड़ा रोल है जी वहाँ, हमारी तरह नहीं है, हम कोऑपरेटिव की एडवाइजरीज है सारे, फ्रॉम नर्सरी टू लेकर एडवाइजरी, मार्केटिंग, एवरीथिंग कोऑपरेटिव। एडवाइजरी का बंदा है, वो आपको बोलेगा ये चीज़ स्प्रे करनी है, अगर अपनी मर्जी से नहीं है, जैसे सिर्फ स्कैब का हम उसके लिए करते हैं, बाकी नहीं है, बाकी वो स्प्रेज अनवांटेड नहीं करते। रिफ्लेक्टर क्या है? वो रिफ्लेक्टर होती है वाइट, आपकी वो समझो एक तरपाल टाइप ही है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है निचले ग्रुप। कलर डेवलपमेंट के लिए वहाँ लाइट की बहुत जरूरत है, हमारे को नहीं है रिफ्लेक्टेबल चीज़, उनको लाइट सन बड़ा फिल्ला सा होता है, मतलब फेडेड सा सन होता है वहाँ, वो चीज़ें देखी मैं वहाँ पे ना। और ड्रिप का ये कि ड्रिप का है और सेंसर्स लगे उसमें। अच्छा, जब मॉइस्चर चाहिए, जब ज़मीन देखेगा ड्राई की अब ज़रूरत है तो ऑन कर देगा ड्रिप को। अच्छा, जब देखेगा, हाँ सेंसर, जब देखेगा कि भी एकदम ही ये काट देगा, है नहीं, मतलब बड़ा सिस्टमेटिक। वहाँ फ्रॉस्ट इंजरीज बहुत होती है, जैसे आपका फ्लावरिंग के टाइम अगर पाला बहुत पड़ता है और बड़ा सीवियर माइनस, उसके लिए स्प्रिंकलर्स है, शान जमाते हो, आइस जमाएंगे फूल पे, उससे प्रोटेक्ट होता है फ्रॉस्ट, हाँ उससे बचता है, ये उनके तरीके हैं। बाकी सब आपका जो हार्वेस्ट का देखो वहाँ पे ना, हार्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम में, हैप के लाल मिले हमारे को, रेड विलॉक्स और हैप के, वहाँ बाकी सब खट्टे वट्टे ये सेब है वहाँ पे।
तो वो हार्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या जो पुलिश लेबर हो 8 यूरो पर आवर लेते हो चार्जेस जो है वो समझो आप 600 रुपये पर घंटा उनके चार्ज। उनने वो रिंग लटकाए साइज़ के, जैसे सेब तोड़ा देखेंगे पहले वो दागी शागी तो नहीं हो, उसको दूसरे बिन में डालेंगे, जो ठीक सेब है मतलब जो 1 नंबर का सेब है उसको रिंग में डालेंगे, क्या साइज़ है उस हिसाब से बिन में डालेंगे, वहीं से सीधा सीए में जाएगा। किंग हाउसेस ऐसे जी कोई बंदा नहीं उसमें, जिसमें शॉर्टिंग होती है ना कोई बंदा नहीं है, सब सेंसर्स लगे हैं, बी ग्रेड वगैरह खुद वो छांटते हैं, 52 ग्रेड्स निकलते हैं। हाँ, और पैकिंग करती है औरतें, 4 औरतें बैठी होती है, एक लाइन पहली वाली औरत करेगी, दूसरी लाइन करेगी, तीसरी करेगी, चौथी हो, तो उनको देते हो 80,000 से 1 लाख रुपया पर महीना। ओके, उनके चार्ज लेबर चार्ज। हाँ, उसके बाद पेटी फटाफट पर है, फिर वो पैकिंग है वहाँ 2 किलो से लेकर 22 किलो, 3 भी है, 5 भी है, 8 भी है, 10 भी है, अकॉर्डिंग टू जैसी डिमांड। जैसे पेटिया क्या सॉलिड हमारे जैसे इसकी होती थी ना, ग्रेड कम देते हैं ना पट्टी की, वैसी पेटिया कहते हैं सॉलिड। अच्छा, ग्रेड वहाँ पे ग्रेड कम, ग्रेड तो जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल 20 किलो हमारी तरह से नहीं चढ़ाओ बढ़ाओ ऐसा नहीं, पर है खट्टे सेब। अच्छा, लाल सेब तो 4 पॉइंट हैप के मिला, रेड ब्लॉक्स 2 सेब है वहाँ जो मीठे सेब, बाकी यही नहीं। और वो तैयारियाँ कर रहे हैं ट्रेड फ्री हो, ऐसे वो जो तैयारियाँ कर रहे हो इंडिया की मार्केट्स में। अच्छा, फॉरेन वगैरह में ना ट्रेड फ्री जैसे हो जाएगा ना, कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ हो जाएगी ना, कमाल करना तो कोई इन्हीं सेब से जो हमारी रेड वैरायटी जो यहाँ पे टेस्ट है। और एक चीज बताऊँ मैं, अब ग्रेन्स भी तो अच्छा बिक रहा है, गाला खट्टे सेब भी अच्छे बिक रहे हैं यार हमारे यहाँ। धीरे धीरे कंज्यूमर का टेस्ट बदल रहा है और हमारे को इन वैरायटी में जाना पड़ेगा। क्या नाम गाला बहुत बिक रहा है आजकल, गाँव ग्रेन इसमें तो क्या बढ़िया खाने, बहुत ही अच्छा रॉयल होता है, फोका हो जाता है एक टाइम के बाद, काफी जो जा रहे हैं। तो ये देखा, बाकी रोल तो वहाँ कोऑपरेटिव का सारा, नर्सरी अपनी इनकी जी, नर्सरी बैंक्स, जीन बैंक्स हो गए आपके, बड्स जो बडवुड का वो अपने जीन्स बैंक वगैरह सब अपना रिसर्च अपनी मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट देती है उनको फंड्स देती है, उसको रन करने के लिए पैसे देती है, बाकी जो कोऑपरेटिव किसानों की है उन्होंने पेड रखे हैं उसमें, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो भी मतलब काम कर रहे हैं, बाकी तो Next please. This is interesting, gentlemen. Here we are talking about the future. This is not made by me or anyone in Holland. This is made in India. And this is the prediction for the coming 4 years. And the prediction is that the consumption in India will double coming 4 years. Based on the income the last 10 years and the expectation of the income the coming years. We have a market of, let's say, medium income and high income of 400 million people. We have now more than 1,000 containers coming in every year. So you have to double your A grade in 4 years from now. Can you imagine what that means? You have 400,000 or 500,000, I think at least 5 lakh growers in the Himalayan belt, that's the minimum. That means that you all have to produce the double A grade, not apples, A grade. So that's what the import says. Next please. So your market is already saved. What do we? Our challenge is substantially increasing the production of soft and temperate fruit. We are now talking only about temperate fruit. People abroad, wherever, they are interested in most advanced way of doing. This is more or less what shows it. This film is not made by me. This is made by some students of one of our universities for applied sciences in fruit production. And these students have made this film 1 or 2 years ago. And later on we can have discussion. This is, I will translate, fruit tree nursery. And here the fruit trees from the nursery are taken out of the soil and collected here. And these are stored till the right moment of planting in a cold store at the temperature of about 1 degree above zero. And this should be constantly with sprinklers to prevent that they are drying. They should be humid all the time.
And here there's a new plantation with concrete. Kun je hem even stilzetten? Oh. Oh. Als je hem even stilzet met dat plaatje. Yes, stop. Here you see the plantation is of concrete poles, which are connected by wires. I don't know if you can see it. And in between you have some bamboo sticks to keep the individual trees upright. But they are connected to at least 2 wires, but probably 3 or 4. And this concrete, this is one of the most common options today, but we are more or less tending back to wood. I tell you why. If it's storming very hard, and we have storms in the Netherlands, concrete appeared to be more breakable than wood. Wood is somewhat more flexible if it's winding very hard. So there is a tendency back to use wood again. Yes, continue. So this is the density of about 3,000 hectares. And here they are adding, we are using all kind of compost or just natural manure from cows, pigs, poultry, whatever. And you see, this is one way of doing, we prefer organic matter above chemical nutrients. It's also very good for the soil structure, not only for the nutrition itself, but also for the soil structure. It gives the same effect if you do it by bucket, so don't think that this is... We have to do seriously with night frost, and during the nights that it's freezing, we have the sprinkling, and if that complex of flowers is frozen all the time till the frost is over, then you can protect your trees or your flowers against frost damage. And here, stop it for a while. This is not very common here. This is what you call a high worker for pruning the tops. But these guys are afraid of water, so they have a cover, a roof, where they can shelter if it's raining sometimes. And they, you know, the big companies, they are pruning all the time. They never stop because of the weather circumstances. They have to go on because otherwise they are not ready in time. And here is a facility that they are shedded from the rain. And they are starting in November to April, but what I already told before, in November they start with the pears, because the pears are not that sensitive for canker. So they prune the pears in November, December, January, but no one starts before the new year, before January, with pruning apples because of this canker risk that I mentioned already before. Go ahead. And if you are cutting the roots, that is a way of doing, if the vigor is too high, to keep the tree somewhat quiet. Yes, okay. There's here there's a knife on, and you can bring it. The more you bring it in the neighborhood of the stem, the more effective it is. But some, you know, the grower always has to decide: do I need to diminish the growth a little, or it should be much less? The nearer you go to the stem, the more the effect is, as you can imagine. The roots of M9, because this is all M9, the roots of M9 are in general not many deeper than 40 centimeters, 30-40 centimeters. So that means that this knife is about, yeah, maximum. We have done it already many years. Most of the time we prefer to do it just after harvest, but sometimes it's later on because it's too wet to work. We do it with a knife of about 40 centimeters, and that's enough. Do you know apples? These are apples. No, these are pears. Yeah, these are pears.
Sorry? Yeah, can be. You see, I don't know if you can see it so well, but the shape of the tree is more or less like this, like a pyramid. And that has to do with the light infall. In general, especially in pears, we have no sunburn at all. But in apples, we can have some sunburn. Not much, but it can be. But in general, you can say we have much less light than you have. You are somewhere between 20 and 30 degrees in Northern Hemisphere. We are on 52 degrees Northern Hemisphere. You can imagine that we have less light, much less light than you have. For that reason, we should utilize the light as much as possible. And for that reason, we try to keep it narrow on top to have maximum light falling into the tree all the time. Another thing is here, we keep about 1 meter, let's say half a meter on both sides. We keep it free from herbs because of competition for nutrients and competition for water. And both are important. So we cannot handle weeds. I can tell you that M9 is much more sensitive for competition of weeds than your stronger rootstocks. Go ahead. What rootstock is this and what variety is this? This, I will tell you later. This is the bees populations for to improve pollination. It's not absolutely necessary, but some people, some growers think that it's just an advantage to do so. We have enough bees, I suppose. Natural bees. This is the crop protection, the most advanced way of doing that. They are spraying 3 rows at a time. It's an enormous machine, but it's also an enormous investment. The tractor cost 80,000 euro and the machine also. I don't exactly know, it's something like that. Only 1.2 crores. One of my cousins bought one, and he bought one because he was not able with his 30 hectares to handle that in one day with 2 people. So he decided to go to this machine, and he's easily handling this 30 hectares in one day. One person, 30 hectares, not 13, 30. Yeah. He's not always exactly maintaining it, and he's 30 in one day, because he has to drive to some other places, because it's not all gathered together in one place. And this is the type of, This is the type of boxes that we are doing the fruits in. These are the boxes for apples, in fact. For pears, because pears are quite a bit heavier than apples, this is in fact for a long storage, it's too high, because the pressure on the fruits which are under in this box, after half a year, they tend to be, not exactly, but they tend to be somewhat flat, and that's not what the consumer wants. So for that reason, the pear boxes are about 15 centimeters lower. There was one question left. The variety that you saw there was the variety conference, which is the main variety in our country, and the rootstock is in the older plantations, it's Quince A, and in the modern plantations it's more Quince Adams and Quince C. The problem with Quince C is that it's too fertile. Is that possible? Yes. If it's too fertile, then you will have too many fruits, and on the long run you will have problems to reach the right size. There are many fruits, many tons, but the size is not exactly what we like. And another disadvantage of this Quince C, and that's what appeared in 2012, is that it's rather frost sensitive. And in 2012 we had in February -21, and that is too much for Quince C, and a lot of trees were killed. An alternative for these wooden boxes, which are common in use, is the plastic boxes. Because of hygienic reasons, also from the government, they prefer the
plastic boxes, but the plastic boxes have the disadvantage that if they are damaged in one way or another, it's a kind of chemical rubbish, while if you have wooden boxes that are not convenient to use them anymore, you can heat your house with that. Dat komt nog, denk ik. Weet je niet helemaal zeker, maar volgens mij komt het nog. Ja. And this is the harvesting. Stop. We have a few systems. This is a system what we call with a plug-out track. This is a machine which is habited by only 4 or 5 people, and there are just transport lines on the rubber lines, and they are collected in these boxes. These are empty, and these are filled one by one, and they are put down in the row, and then with a lifting truck they are taken out. The other system is coming, and that's the most common. This is the flip track. No, this is the high worker. I thought it was the flip track. This is the high worker. They are only picking the top. Yeah, go ahead. They are picking only the tops here. And here is written down, the apples are picked on the red color. That means in the first round we only pick the apples having 50% red or more. We are not aiming for 100% but 50 or more. And this is the most common way of doing. We have a lot of tractors and they have 4 or 5 of these boxes behind, and the people are just walking along till they are all off, and then it's moved forward for 25 meters, and then there we go again till they are all filled up. And picking, to give you an idea, a common picker can in this system pick from 1200 to 1500 kilograms a day. 1200 to 1500 kilograms a day. But that day we have to pay them. And this is the transport to the, you see, they are collected in the, you see this is not red, this is only partly red, but some varieties are not that red, that's not a problem. And the storage is for apples to 2 or 3 degrees, we usually store them at 1, and pears minus 0.7, 0.7. And this is the kind of boxes and other material that they are sold in. So these are empty yet, and later on you will see the grading machine. This is a very big grading machine. They are all washed by water and transported in the water, and they are all by computer raised machine. They are sorted and they're coming in the right, exactly in the right size. This is not a private anymore. This is more of the cooperatives which are using such big grading facilities. If you come to a regular farmer, you will not find this. And sometimes they are just on the farm already, or in the corporation, they are packed immediately, so they go straight to the supermarket where they can have, where they can be sold within a few days. Yes, someone is picking them off and filling a box with 10 or I don't know how many of these fruits in it. And this is pears. It's more or less the same, except that pears are not floating. For that reason, pears are usually transported by salt water, salted. That's necessary, otherwise they go to the bottom. And this is our main variety conference.
It looks somewhat like Abate Fettel, maybe you heard about that? But it's tasting much better. And it's also better in the field of storage. You can store this variety for 1 year. And this is a very common way of packing plastic boxes of 1 kg. So, and this is the variety that we are producing by ourselves, about 220 tons in 4 hectares. 55 tons per hectare, averagely. That's what you sell, not what you put, that's what you sell. A grade. No, I think 90% is A grade. Okay. And the 10% is not really D grade, but most of the time it's not the problems with the pears. Most of the time the 10% that falls out, they are too small. Okay. This is the end.